हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रत राया में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट 8 का सेकंड पार्ट। ओके, सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि जो भी वीडियो या फिर जितना भी टेस्ट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। ओके, एंड सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है 51 नंबर। ओके, क्योंकि हम दो पार्ट में एक टेस्ट को डिवाइड करके कंप्लीट करवा रहे हैं, बिकॉज वीडियो उससे ज़्यादा लंबा ना हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, विच इज़ consider the following statements about the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 और इसके रिगार्डिंग which statement is correct वो पूछा। ओके, so first statement is it provides for the maintenance and restoration of surface water only and not groundwater. Is it true? No, it's not correct, because ये सरफेस वाटर के साथ साथ ग्राउंड वाटर को भी रिस्टोरेशन और मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे क्या बोल दिया, ओनली और नॉट। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, बिकॉज यहाँ पे ओनली एंड नॉट बोल दिया, बट वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन जो एक्ट है वो 1974 का, जो कि मेंटेन करता है और रिस्टोर करता है ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों को। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट ऑथराइजेज द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू इम्प्लीमेंट द वर्क फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B. Only two statement is correct. Okay, next question is which of the following gases has the highest global warming potential? So first statement is carbon dioxide, sulfur hexafluoride, nitrous oxide and methane. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बोलते हैं तो इसका हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 होगा। हेक्साफ्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो 23,900 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं तो इट्स 310 एंड मीथेन की बात करते हैं सो इट्स 21। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इट विच इज़ हाइएस्ट, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच। ओके, रिलेटेड टू द बायोटिक इंटरैक्शन एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल रिगार्डिंग द बायोटिक इंटरैक्शन और उसके एग्जाम्पल के, और यहाँ पे क्या करेक्टली मैच पूछा गया। ओके, सो फर्स्ट वन इज प्रीडेशन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रीडेशन, इट्स अ पिक्चर प्लांट कंज्यूमिंग इंसेक्ट। इज इट ट्रू? yes, it's a correct. And in predation, one is benefited and another one is harmful. ओके, एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज कंपटीशन। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंपटीशन प्लांट इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। और कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को ही नुकसान होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज एमेंसलिज्म की बात करते हैं अगर हम, सो इट्स अ स्पैरो ईटिंग सीड। No, it's not related to it's not the example of emensilism. Sparrow eating seed is the example of predation. Okay, predation. And in predation क्या होता है कि एक को प्रॉफिट होता है और दूसरे को नुकसान। ओके, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एमेंसिलिज्म, इन एमेंसिलिज्म वन इज़ नेगेटिव विच मीन्स हार्म, उसको हार्म होता है, एंड दूसरा को न्यूट्रल रहता है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, ये तीन हो गए। एंड इसमें से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अनदर वन विच इज mutualism. Okay, if you are talking about the mutualism, in the mutualism both are benefited. Okay, both are benefited. Next one is commensalism. In commensalism, both one are benefited, another one is neutral, and another one is parasitism. In this, one is benefited, another one is
harmful. Okay, so this is the another 3 1. So answer will be option number B. Let's come to the next question, which is consider the following pairs. There is asking about the type of biodiversity and measures. So there is asking about the correctly matched statement. So first one is alpha diversity. In alpha diversity, changes in the amount of species between the ecosystem. No, ये changes in amount of species between ecosystem, it is related to the beta diversity, not alpha. So first statement is incorrect. Next one is beta diversity, species richness in a particular ecosystem. Is it true? No, it's also incorrect because it's talk about the alpha biodiversity, not beta one. Okay, so it's exchanged. There is a exchange of options or examples. Okay, so next one is gamma diversity, total biodiversity within an entire region. Yes, it's a correct one. So answer will be option number A. Only one statement is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements, and there is asking about the correct one. So first statement is photochemical smog is a mixture of pollutants that are formed when nitrogen oxides and volatile organic compound react to sunlight, creating a brown haze above cities. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is photochemical smog is an oxidizing smog. Yes, it's also correct. So answer will be option number C. Both statement 1 and 2 is correct. Next question is consider the following statements. And there is asking about the how many of the given factors are responsible for soil pollution. Okay, soil pollution के regarding which statements, which factors are responsible, ये पूछा गया. Okay, so first one is fly ash from the thermal power plant. Yes, this is a factor and responsible for the soil pollution. Next one is electronic waste. ये भी है. Mining operations, it's also fertilizers and pesticides, also domestic garbage dumped on land. Yes, all statements are correct. So answer will be option number D. Okay, next question is which among the following is the core national implementing entity for the national adaptation fund for climate change. Okay, so इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नीति आयोग नहीं करता है. नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी नो. नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट नो. इट्स डन बाय द नाबार्ड, विच इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द national fund for climate change, it's formed in 2015, and in this scheme सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी को दिया था कितना? 350 करोड़ at the time to meet the adaptation of the climate change initially. and ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है. ओके, स्कीम है. और सेंटर सेक्टर स्कीम कैसा होता है? जिसमें से कि सेंटर सारा पैसा देता है स्टेट को और यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ओके, एंड एक अनदर टाइप का होता है जो सेंटर स्पॉन्सर्ड होता है. ओके, सेक्टर स्पॉन्सर्ड, जिसमें कि स्टेट एंड सेंटर दोनों का 60-40 और समथिंग लाइक दैट ऐसे शेयर होता है. सिर्फ सेंटर नहीं देता, बट सेंटर सेक्टर स्कीम में सिर्फ सेंटर पैसा देता है, स्टेट को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. द कंजर्वेशन मूवमेंट and state, and there is asking about the correctly match. Okay, so first statement is चिपको मूवमेंट इन राजस्थान. नो, चिपको मूवमेंट हुआ था कहाँ पे? सो इट्स हेल्ड इन उत्तराखंड. और ये कब हुआ था? चिपको मूवमेंट कब हुआ था? 19
1973 में। ओके, एंड इसमें क्या था कि जब वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों की कटाई की जा रही थी। ओके, तो उस टाइम सभी लोगों ने क्या किया था, पेड़ को, फॉर एग्जांपल ये पेड़ है तो उसको हग करके और चिपक के उसमें खड़े थे। ओके, काटने नहीं दिया जा रहा था। ओके, दिस इज कॉल्ड चिपको मूवमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये राजस्थान में नहीं उत्तराखंड में हुआ था। ओके, नेक्स्ट वन इज साइलेंट वैली मूवमेंट हेल्ड इन केरला, करेक्ट, ये भी 1973 में हुआ था। नेक्स्ट वन इज एपिको मूवमेंट, इट इज हेल्ड इन दी कर्नाटका। ओके, कर्नाटका में हुआ था और ये 1983 में हुआ था। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्टली मैच। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विथ रेफरेंस टू द environmental impact assessment consider the following statements, and there is asking about the correct one. So first statement is environmental clearance is mandatory for new project or modernization under the Air Prevention and Control Pollution Act 1981. Is it true? No, it's not correct because it's not under the Air Prevention and Control Pollution Act 1981. It comes under the Environment Protection Act 1986. Okay, not this one. So first statement is incorrect. Next one is all industries are mandated to comply with the environment impact assessment requirements regardless the investment value of their project. Is it true? No, it's not correct because it's not, इसमें सभी नहीं होगा, इसमें all बोल दिया, but it's in some, not in all. Okay, so answer for this question is option number D, because there is asking about the correct one and both statement are incorrect here. Okay, next question is consider the following statements regarding the GRAIL mission. Okay, GRAIL mission क्या है? So there is asking about the correct one. So first statement is related to GRAIL mission. First statement is the GRAIL mission was launched to study the moon's gravitational field. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the mission was carried out by the ISRO in the collaboration with the European Space Agency. Is it true? No, it's not done by the European Space Agency or ISRO. It's done by the NASA. और ये कब स्टार्ट हुआ था? 2011 में। और नासा किसके एयर स्पेस है, सॉरी ये किसका है? तो ये यूएसए का है। ओके, एंड अगर हम ग्रेल की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी। ग्रेल, G for gravity, R for recovery, and I for interior, and L for laboratory. Okay, so answer for this question is option number C. Both statement 1 and 2 are correct. Next, sorry, not both one, sorry, इसमें आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1 ओनली इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो गया था? इनकरेक्ट हो गया था। ये नासा के द्वारा किया गया था, न कि इसरो इन कोलैबोरेशन विद द स्पेस, सॉरी, यूरोपियन एंड स्पेस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन and there is asking about the in situ conservation. Okay, in situ conservation approaches. So first one is related to biodiversity conservation sites. First one is national park. Is it in situ? Is it true? Yes, it's a in situ. Next one is wildlife safari park. No, it's not in situ, it's a ex situ. Okay, एक्स सितु। एंड इससे पहले कि हम जानते हैं कि कौन कौन सा एक्स सितु और इन सितु है, इन सितु लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि इन सितु कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप रह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप घर में हो तो घर में ही रह के, होम में रह के आप, सॉरी, अपने घर में ही रह के आप पढ़ाई कर रहे हो। और एक्स सितु का क्या मतलब होता है कि आप हॉस्टल में आके पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कहीं और जाके कंजर्वेशन करना किसी भी एनिमल्स का,
उसको एक्स सीतु बोलते हैं। ओके, सो नेशनल पार्क हो जाएगा हमारा इन सीतु, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो जाएगा एक्स सीतु। नेक्स्ट वन बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ इन सीतु, जहाँ पे है वहीं पे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। एंड जूलॉजिकल पार्क इज एक्स सीतु, नॉट इन सीतु। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच इज स्टेटमेंट 1 and 3. Okay, let's come to the next one, which is which among the following best describe the Allen's rule. Okay, Allen's rule को कौन best describe कर रहा है? So first statement is it states that organism in colder climate have large surface area to volume ratios. Is it true? No, it's not correct. It's not related to the Allen's rule. It's related to the Bergamon's rule. Okay, क्या होगा? बर्गामन्स रूल, नॉट रिलेटेड टू द एलेंस रूल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और बर्गामन्स रूल में क्या होता है? बेसिकली बॉडी साइज वर्सेस क्लाइमेट की बात की जाती है, बॉडी साइज वर्सेस क्लाइमेट की बात की जाती है। ओके, एंड अगर हम इसी में बात करते हैं कि एलेंस रूल में किसकी बात की जाती है? सो इसमें अपेंडेजेस वर्सेस किसकी? क्लाइमेट की बात की जाती है। ओके, सो ये हो जाएगा इसका। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इट सेज मैमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट टेंड टू हैव शॉर्टर लिम्स एंड अपेंडेजेस टू द रिड्यूस हीट लॉस। इज इट ट्रू? यस, ऑप्शन नंबर बी टॉक्स अबाउट द एलेंस रूल। ओके, नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें, इट एक्सप्लेन्स कंपटीशन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ओवर टाइम, इट कम्स अंडर द गाउस लॉ। ओके, Gauss's law. So this one is also incorrect. Next one is describe the ecological succession in tundra biomass. It's talk about the Clement law. Okay, it comes under the Clement law. So answer will be option number B is the correct one related to the Allen's rule. Okay, next question is in the context of zoonotic disease consider the following statement. और यहाँ पे क्या पूछा है? सो करेक्ट वन। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द zoonotic diseases. So first one is they are infectious disease transmitted from animal to human. Yes, it's a correct one. zoonotic disease बोला ही उसी को जाता है जो एनिमल से ह्यूमन में ये फैल रहा हो। ओके, सो first statement is correct. And zoonosis can be only caused by virus and bacteria. Is it true? No, it's not correct because it's not only caused by the virus and bacteria, it's also from the parasites and fungus. Okay, so statement second is incorrect. Next one is the northeast region contributed to the higher zoonotic disease outbreak compared to the southern region. Is it true? Yes, it's a correct statement. So answer will be option number B. Both statement, only two statement is correct. Okay, so next question is which of the following conventions especially deals globally with the prevention of marine pollution by dumping of waste and another matters? So it's related to the first one is Minamata Convention 2013. Is it true? No. Next one is London Convention 1973 and 72. Yes, option number B is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is consider the following, and that is asking about the how many of the above adaptations of the desert animal to survive the extreme heat. So first one is long legs and ears, nocturnal nature, producing concentrated urines. Yes, all of the above is correct related to the adaptation of desert animals to survive in extreme heat. Okay, so answer will be option number C. All three statements are correct. Okay, next question is with reference to eutrophication,
which of the following statement is are correct related to the eutrophication. Okay, so first one is और यहाँ पे क्या पूछा है, so correct statement पूछा है. So first statement is it is the man-made process and loss does not occur naturally. Is it true? No, it's not correct, because eutrophication is eutrophication process is natural, not man-made process, and it does not occur naturally. ये naturally ही occur करता है. So first statement is incorrect. Next one is the prime eutrophication contaminants are nitrates and phosphates. Yes, it's a correct one. Next one, it restricts the growth of plant in aquatic environment. Is it true? Yes, it's also correct. So answer will be option number B. 1 and 2 both statement is correct. एंड अगर हम इसमें बात करते हैं नाइट्रेट की, ओके, नाइट्रेट जो है उसका नाइट्रिक का अगर प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है वाटर में तो वो क्या करता है, सो उससे कौन सी डिजीज़ होती है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की डिजीज़ होती है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements with regard to harmful effect of chemical in drinking water. ओके, सो इसमें क्या है, केमिकल्स एंड ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है. डिफिशियंसी ऑफ फ्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर causes tooth decay. Correct. High concentration of lead in drinking water can damage the kidney and liver. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statement 1 and 2 is correct. Next question is consider the following statements regarding the biomagnification. Okay, related to the biomagnification, which statement is correct? So first statement is it refers to the increase in concentration of toxic substances from the lower to higher trophic level. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is fat soluble substances are more prone to biomagnification. Yes, magnification. Yes, it's also correct. Next one is it usually affect primary producer the most. Is it true? No, it's not, because it's affect most to the top consumer, not primary producer. Okay, so answer for this question is option number B. Only 2 statement is correct. Okay, next question is which of the following are criteria used to identify biodiversity hotspot. Okay, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से क्राइटेरियाज हैं यूज़ किए जाते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज स्पेसिस रिचनेस. इज इट ट्रू? करेक्ट. हाई इंडेमिनिज्म. करेक्ट. थ्रेट perception. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, which is 1, 2, 3. All 3 statements are correct. Okay, next question is consider the following statements about the Wildlife Protection Act 1972. Okay, so Wildlife Protection Act 1972 के regarding which statement is correct. Okay, so first is it provides for the appointment of chief wildlife warden by the central government. Is it true? No, it's not correct, because it's not done by the central government, it's done by the state government. Okay, state government. So first statement is incorrect. Next one is it promotes both in situ and ex situ conservation areas. Is it true? Yes, it's also correct. Next one is it was enacted for the protection of animal only. Is it true? Only animal species. Is it true? No, it's not correct, because it enact for the protection of both animal species and plant species. So both the statement is
So statement 1 and 3 is incorrect and statement 2 is correct, and there is asking about the correct statement. Okay, so answer will be option number A. Only two statement is correct. Only statement 2 is correct. Okay, next question is with respect to Panchamrit strategy of India's climate action. India's climate action, consider the following statement, and there is asking about the correct one statement. Okay, so first one is it aims to attain the target of 500 gigawatt of non-fossil energy capacity by 2030. Correct one. Its target is to achieve net zero emission by 2070. It's also correct. Okay, and अगर हम बात करते हैं पंचामृत की, okay, so पंचामृत will be announced by PM Modi in 20 COP 26th. Okay, COP 26, और ये कहाँ पे हुआ था? इट हेल्ड इन ग्लासगो जो कि यूके में है, एंड ये इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट. एंड जैसा कि यहाँ पे नाम से आपको पता चल रहा है पंचामृत, तो उसमें 5 टारगेट्स होंगे. सो दो तो यहाँ बता दिए कि फर्स्ट वन इज इट एम्स टू अटेन द टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030. अनदर जो था 7 नेट जीरो का अचीव करना था इमिशन बाय 2070. ओके, ये इंडिया का टारगेट था. ओके, और आपको कमेंट में ये बताना है कि चाइना का टारगेट कितना था, कब तक था, मतलब नेट ज़ीरो अचीव करने का, एंड यूएसए का कब तक था, एंड रसिया का कब तक था. ओके, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. एंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो और 3 कौन से टारगेट थे इंडिया के जो मोदी जी ने अनाउंस किए थे COP 26 में ग्लासगो में. सो अनदर वन इज़ रिन्यूएबल एनर्जी शेयर. रिन्यूएबल एनर्जी शेयर को जो वो था 50% बाय 2030. ओके, एंड अनदर वन इज रिडक्शन ऑफ कार्बन इमिशन. कार्बन इमिशन को कम करने का बाय कितना? 1 बिलियन टन बाय 2030. एंड अनदर वन इज कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करना. कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना बाय 45% इन 2030. 45% इन 2030. ओके, so answer is option number C. Let's come to the next question, which is consider the following statements about the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which is CITES, and related to the CITES, which statement is correct. So first statement is this CITES secretariat is administered by the IUCN. Is it true? No, it's administered by the United Nations Environment Program, UNEP. Okay, next one is it is non-binding on the countries ratifying it. Is it true? No, it's not correct, because जो भी इस फ्रेमवर्क को रेटिफाई करता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, वो बाइंडिंग हो जाता है उस कंट्री पे. ओके, रेटिफाई करने के बाद, और यहाँ पे नॉन बाइंडिंग बोला. सो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. बोथ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements about the earth's biodiversity is correct. Okay, earth's biodiversity related कौन सा statement correct है? So first statement is more than 70% of all the species recorded are animals. Is it true? Yes, it's a correct statement. So यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा. ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी हम देखते हैं. अमंग एनिमल्स, रेप्टाइल्स एंड मोस्ट ऑफ द स्पेसीज रिच टैक्सोनॉमी ग्रुप. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज इट्स नॉट रेप्टाइल, इट्स insect. Okay, insects. And among animals, insect are the most species rich taxonomy in groups. So second statement is incorrect. Option C is as per the IUCN,
So far 15 million species have been described. No, it's not 15 million, it's 1.5 million, okay, not 15 million. So this statement is also incorrect. Next one is the number of fungi species in the world is less than the total of the species of the fishes. Is it true? No, it's not less than, it's more than, okay, ज़्यादा है. So answer will be option number A is the correct one. Next statement is the process of using fungi to break down hazardous pollutants in the environment is refers to, it's referred to phycoremediation. No, phytoremediation में क्या होता है कि इसमें जो है प्लांट यूज ऑफ द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब एक्यूमुलेट डिग्रेड और डिटॉक्सीफाई पॉल्यूटेंट्स, ये प्लांट्स के द्वारा किया जाता है ना कि, और यहाँ पे क्या पूछा है, फंगस के द्वारा, ओके, फंगी के द्वारा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट वन इज माइक्रो रेमेडिएशन. इज इट ट्रू? यस, माइक्रो रेमेडिएशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. बट हम बायोलीचिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज बायोलीचिंग? बायोलीचिंग basically involves the microorganism, usually bacteria, to extract metals from the ores, okay. And if you're talking about the vermicompositing की अगर हम बात करते हैं, it uses earthworm to decompose organic matter to convert it into nutrient rich compounds, okay. And अगर हम इसकी बात करें ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, ना कि फंगाई के स्पेशल हजार्डस के बारे में, ओके. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ऑन माइक्रो रेमेडिएशन इज द करेक्ट वन, ओके. रिलेटेड टू द फंगाई टू ब्रेक डाउन हजार्डस पॉल्यूटेंट्स इन द environment is environment, okay. So next question is, consider the following statements refers to the sacred groups, okay. And there is asking about the correct one. So first statement is, it is safeguarded by indigenous communities as a spiritual of cultural sanctity. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is, any form of human disturbance is prohibited to preserve their untouched and natural state. Is it true? No, it's not, because it's not any, it means some, okay. So there is some human disturbance is prohibited to preserve their untouched natural sites. Is it? Yes, it's so. This statement is incorrect. So answer will be option number A. Only one is correct one, okay. एंड आपको यहाँ पे बताना है कि सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था, जो कि टेस्ट 8 का सेकंड था, उसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे सैक्रेड ग्रुप के बारे में. सो वो एग्जांपल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन से हैं और किस स्टेट से रिलेटेड है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी, ओके. And there is asking about the correct one. So first statement is, it was established under the Environment Protection Act 1986. Is it true? No, it's not correct, because it's not related to it, not comes under the Environment Protection Act 1986. It comes under the basically Wildlife Protection Act 1972, okay. So first statement is incorrect. Next one is, it regulates the exchange of animals of the endangered category among zoos. Is it true? Yes, it's a correct one. So answer will be option number B. Only statement 2 is correct, okay, not 2 statement. So answer is option number B. Let's come to the next question, which is, it refers to the diversity within a single species. This diversity is crucial for a species adaptation to changing environments, ensuring survival through significant environmental changes. It's the
above passage reflect which type of biodiversity? It's reflecting related to the genetic diversity. Okay, so answer will be option number A. Next question is, consider the following statements regarding the sustainable development goal. Okay, sustainable development goal regarding which statement is correct. Okay, so first one is, और यहाँ पे क्या पूछा है? सो करेक्ट वन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज sustainable development goal 13 deals with the climate change. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is HDC India index is released by the Ministry of Statistics and Program Implementation. No, it's not done by the Ministry of Statistics and Program Implementation. It's done by the नीति आयोग. ओके, नीति आयोग. और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार यूपीएससी में ये पूछा गया था कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है. ओके, सो ये हो गया. एंड सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? दिस वन इज इनकरेक्ट. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं एसडीजी के बारे में, विच इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देर इज़ अ टोटल 17 गोल्स. एंड अगर हम टारगेट्स की बात करते हैं 169 टारगेट है टोटल इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ओके, एंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कब तक कंप्लीट करने का टारगेट है? तो 2030 तक. ओके, एंड इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं. सो देखते हैं इसमें 17 कौन कौन से गोल हैं. पहला हो जाएगा, पहला जो एसडीजी का गोल है विच इज़ नो पॉवर्टी. फर्स्ट वन टॉक्स अबाउट द नो पॉवर्टी. सेकंड इज़ जीरो हंगर. थर्ड इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स. फोर्थ इज़ क्वालिटी एजुकेशन. फिफ्थ वन इज़ जेंडर इक्वालिटी. सिक्स्थ वन इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. सेवेंथ वन इज़ affordable and clean energy. Eighth one is decent work and economic growth. Ninth one is industries, innovation and infrastructure. And 10th talks about the reduced inequality. And 11th talk about the sustainable cities and communities. And 12th talks about the responsible consumption and production. And 13 talks about the climate change. And 14 talk about the life below water. And 15th जो है एसटीजी का गोल वो बात करता है लाइफ ऑन लैंड. ओके, एंड 16 टॉक अबाउट द पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. एंड 17 टॉक अबाउट द पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. ओके, ये 17 सस्टेनेबल गोल्स है टोटल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it located in the Sahyadri range of Western Ghat, was established in 2010 and straddles Kolhapur, Satara, Sangli and Ratnagiri district of Western Maharashtra. It comprises of rich evergreen, semi-evergreen and moist deciduous forest. It is the fine tiger reserve of Western Maharashtra and the first tiger reserve of Western Maharashtra and fourth tiger reserve in the state, spreading over the two protected areas of Koyan sanctuaries and वाइल्ड सेंचुरी एंड चंदोली नेशनल पार्क. सो एबव पैसेज किसको डिस्क्राइब किया गया है? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, टॉक्स अबाउट द साहिद्री टाइगर रिजर्व. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड इसी में अगर हम बहुत देखते हैं, सो तोड़ावा आंध्री टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे लोकेट करता है? तो ये भी महाराष्ट्र में ही करता है. नेक्स्ट वन इज साहिद्री भी. एंड मेलघाट टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में ही लोकेट करता है. एंड अगर हम पेंच टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, इट्स लोकेटेड बिटवीन दी Maharashtra and Madhya Pradesh. Okay, so answer is option number B. Let's come to the next question, which is, which one of the following is the correct sequence of food chain? Food chain के regarding कौन सा sequence correct है? First one is Dinoflagell heritage copepoda pods. No, it's not. Heritage Dinoflagell copepods. No.
कॉर्पोर्ट्स ये भी नहीं होगा. डायनोफ्लेवर्स, कॉर्पोर्ट्स एंड हेरिंग. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्टली sequenced of the food chain. So correct is option number D. Next question is with reference to Wildlife Protection Amendment Act 2022 consider the following पेयर्स. ओके एंड यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्टली मैच्ड पेयर पूछा है. सो फर्स्ट वन इज शेड्यूल 1 एनिमल स्पेसीज विद द हाइस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, करेक्टली मैच. शेड्यूल 2 प्लांट स्पेसीज लिस्टेड अपेंडिक्स अंडर द साइट्स, नो, इट्स रिलेटेड टू द शेड्यूल 3. एंड शेड्यूल 2 की बात करते हैं एनिमल स्पेसीज विथ लेसर प्रोटेक्शन, लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, यस. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच. ओके, विच इज स्टेटमेंट 1. Next one is consider the following statements with reference to joint forest management. Okay, so related to joint forest management, correct statement पूछा गया है. So first statement is it is the model of forest management where both the state government and the central government are involved in the planning and conservation program. Is it true? No, it's not correct because it's not here, it's local. Okay, state government and local government are involved in the planning and conservation programs, not center. Okay, so first statement is incorrect. Next one is it was first recognized under the National Forest Policy 1988. Is it true? Yes, it's a correct one. So answer for this question is option number B, only 2 statement is correct. Next question is clean development mechanism joint implementation. Clean development mechanism, joint implementation and international emission trading are the past of which of the following? Okay, so first one, so answer will be option number D, which is option number C, which is Kyoto Protocol. Okay, and Kyoto Protocol signed in 1997, and so answer is option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, इट्स कम्स इन द 1987 बट इन्फोर्स कब हुआ था 1989 में. एंड इट्स टॉक अबाउट द ओजोन डिप्लेशन. ओके, ये ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट की, इट्स साइन इन 2015 इन 2015. एंड इसमें क्या बात करते हैं, सो लिमिटिंग द ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस विच इज़ प्रीफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस बोला गया था. एंड अगर हम इसकी बात करते हैं, सो इट ओपन फॉर द सिग्नेचरीज ऑफ द अर्थ डे. ये अर्थ डे 22 अप्रैल 2016 में इसको ये किया गया था. एंड ये कहाँ पे हुआ था, साइन कहाँ किया गया था, सो एट न्यूयॉर्क यूएन हेडक्वार्टर विच इज़ न्यूयॉर्क. ओके, एंड सो ये हो गया. नेक्स्ट अगर हम नगोया प्रोटोकॉल की बात करते हैं, सो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द नगोया प्रोटोकॉल, इट्स एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिंग traditional knowledge. Okay, and it comes in 2010 and in force in 2014, and India signed it in May 2011. Okay, so answer will be option number C. Next question is with reference to 5th generation of fighter jet aircraft, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में है, फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा गया. एंड एयरक्राफ्ट टाइप दिया गया है कंट्री से, कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं. ओके, सो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं F-35, इट्स नॉट कम्स फ्रॉम द जापान, इट्स यूएसएस. ओके, यूएसएस से फाइटर जेट एयरक्राफ्ट. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली मैच. नेक्स्ट वन इज SU, which is Sukhoi 57 related to the Russia, correct one. JP-20, it's comes from the China, not from the Japan. So this statement is also incorrectly matched. So answer will be option number A, only one statement is correctly matched. Okay, next question is consider the following statements regarding the regulation for noise pollution in India. So there is asking about the correct one.
correct statement related to the noise pollution in India. So first statement is the Central Pollution Control Board has laid down the permissible noise levels in India for different areas. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is an area with 2 kilometers of the premises of hospital, educational institution and courts may be declared as a silent zone. Is it true? No, it's incorrect because it's not 2 kilometers, it's only 100 meters. Okay, so this statement is incorrect. And noise pollution की अगर हम बात करते हैं, it comes under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Okay, it comes under this one. So answer for this question is option number A. Only one statement is correct. Okay, next question is consider the following statements with respect to AC drain. Okay, if we're talking about the AC drain, there is asking about the correct statement. Okay, so first one is AC drain is a result from the emission of oxides of sulfur and nitrogen. Yes, it's a correct one. Next one is AC drains pH below 5.6. Yes, it's also correct. Next one is acid rain corridors water pipes resulting in the leaching of heavy metals into the drinking water. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. All three statements are correct. एंड इफ़ आर टॉकिंग अबाउट द pH लेवल, अगर हम pH की बात करते हैं, pH लेवल की जो कि 1 to 14 मेजर किया जाता है, जिसमें कि अगर pH वैल्यू 7 फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 है, 7 से कम रहेगा, 7 to 1 के बीच में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. एंड अगर वो 7 से ज़्यादा रहेगा, 7 to 14 के बीच रहेगा तो इट्स कॉल्ड बेसिक. ओके, और बेस. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Next question is which of the following statement about the ozone are not correct. Okay, there is asking about the not correct related to the ozone. Okay, and ozone is a gas, greenhouse gas. Ozone क्या है, ग्रीन हाउस गैस है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली स्टेबल दैन द ऑक्सीजन. इज इट ट्रू? नो, इट्स लेस स्टेबल दैन द oxygen. Okay, basically. So first statement is incorrect. Next one is tropospheric ozone is a greenhouse gas. Correct one. It is in the stratosphere. It forms a shield protection us from the UV radiation of the sun. Yes, it's also correct. अगर ये UV radiation डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आ जाता है तो क्या होता है, हमारे स्किन डिजीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ओके, सो answer for this question is because there is asking about the not correct one, so answer will be option number A. Statement 1 only is correct. Okay, which is statement 1. Let's come to the next question, which is consider the following statements with respect to ozone depletion. Okay, if we're talking about the ozone depletion and related to this one, yeah, there is asking about the correct statement. So first one is chlorofluorocarbon are very toxic organic molecules that cause ozone depletion. Is it true? No, it's not correct. क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही ओजोन डिप्लेशन होता है, बट इट्स नॉट टॉक्सिक, इट्स नॉन टॉक्सिक. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज पोलर stratospheric cloud provide a surface for the reaction causing ozone depletion. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is free chlorine radicals from the CFC, which is chlorofluorocarbon, are broken down by the UV radiation. Is it true? Yes, it's a correct one. Okay, so एंड अगर हम बात करते हैं ये ओजोन डिप्लेशन के बाद, ये कहाँ पे होता है, स्ट्राटोस्फेयर में. ओके, स्ट्राटोस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर का सेकेंड लेयर है. ओके, स्ट्राटोस्फेयर और फर्स्ट क्या है, तो ट्रोपोस्फेयर. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच इज स्टेटमेंट 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल मटेरियल आर फाउंड इन ई वेस्ट. कौन सा हार्मफुल मटेरियल ई वेस्ट में पाया जाता है. ओके, सो करेक्ट पूछा है. फर्स्ट वन इज डायोक्सिन, फ्यूरान, कैडमियम, क्रोमियम,
Yes, all. So answer will be option number B. All are found in the e-waste. Okay. Next question is recently the scientist studies the structure of liquid carbon for the first time using the X-ray diffraction. In this context, consider the following statement regarding the liquid carbon. Okay, liquid carbon के regarding कौन सा statement correct है वो पूछा गया. Okay, so first one is it requires temperature below -40 degrees Celsius and pressure over several megapascals to exist. Is it true? No, it's not correct because it's talk about the not -40 degrees Celsius. It's 4000 Kelvin. 4000 Kelvin in a is temperature required, and if we're talking about the pressure, it's 100 to 160 GPa only required. Okay, so first statement is incorrect. Next one is it can be found naturally in interior of planets. Is it true? Yes, it's a correct one. So answer will be option number B. Only statement 2 is correct. Okay, next question is which of the following best describe the Dhruva initiative recently seen in news? Okay, Dhruva initiative को कौन best describe करेगा? So first one is it is a centralized biometric identification system for all Indian citizens. Is it true? No, it's incorrect. It is a unique geocoded digital address to every home in India for improved service delivery. Yes, option number B is the correct related to the Dhruva initiative. Next question is consider the following statements regarding the global important agricultural heritage system. Okay, global important agricultural heritage system program related कौन सा statement correct है वो पूछा गया. Okay, so first one is it is an UNESCO initiative aimed at identifying and conserving agricultural heritage worldwide. Is it true? No, it's not correct because it's not related to the UNESCO. It comes under the Food and Agricultural Organization, FAO. Okay, so first statement is incorrect. Next one, it includes systems that are both land based and aquatic based agricultural heritage sites. Option number statement B is second is correct. Next one is India has no sites under the globally important agricultural heritage system program. Is it true? No, it's not correct because India के पास 3 है. Okay, एंड अगर हम उसकी बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज पैम्पोर सैफरॉन हेरिटेज इन जम्मू एंड कश्मीर जो कि 2011 में उसको ऐड किया गया था इन दिस वन इन ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम प्रोग्राम में, जो कि फर्स्ट कौन था? सो पैम्पोर सैफरॉन हेरिटेज इन जम्मू एंड कश्मीर 2011. अनदर वन इज सेकेंड की अगर हम बात करते हैं कारापूट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो कि ओडिशा का है और ये 2012 में इसको इंक्लूड किया गया था. एंड थर्ड वन इज कुट्टानाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम कम्स फ्रॉम द केरला जो कि 2013 में ऐड किया गया था. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. Only statement 1 is correct. Only one statement is correct, which is statement second. Okay. Next question is the term distributed denial of services. Okay. Term distributed denial of services often mentioned in the context of cyber security refers to an first statement is technique used to recover lost data from the encrypted system. Is it true? No, it's not correct. Next one is attack where multiple systems overwhelm a target server or network, making it inaccessible to legitimate users. Yes, it's correct statement. So answer is option number B is correct. Next question is consider the following statements with reference to compensatory एफोरेस्टेशन फंड और यहाँ पे करेक्ट वन पूछा है. सो फर्स्ट वन इज इट इज established by an act passed by the parliament. Is it true?
Yes, it's a correct one. Next one is it is placed under the public account of India. Yes, it's also correct. Next one is the national fund receive more than half of the total compensatory afforestation fund. Is it true? No, it's not correct. But because it's not more than half, it's only 10%. Okay, by the national fund for recovery, and जो 90% है वो कहाँ से आएगा? So it comes from the state कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड, स्टेट कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड से आएगा. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट विच इज 1 and 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to institutions developed by economic capital framework. Okay, economic capital framework regarding which state economic capital framework in India, or there is asking about the institutional develop. कौन सा institution develop किया है? So it's developed by the RBI, which is option number B is the correct one. Next question is with reference to the ecological succession, which of the following statement is not correct related to the ecological succession. Okay, यहाँ पे not correct पूछा है. So first statement is primary succession can begin on surface like bare rock, lava and sand dunes. Is it true? Yes, it's a correct one. So ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे not correct पूछा था. Secondary succession can be observed in the areas affected by flood, forest fire and agriculture. It's also correct. Next one, in ecological succession species diversity typically decreases over time. No, over time ये increase करता है. So option C is incorrect. Next one is a climax community is relatively stable and in equilibrium with the climate of the region. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C is incorrect. Okay, let's come to the next question, which is in the context of ecology, यहाँ पे एमेंसलिज्म के बारे में पूछा गया. रिफर्स टू, ये किससे रिलेटेड है? ओके, सो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें एमेंसलिज्म में होता क्या है. एमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को तो नुकसान होगा बट दूसरा न्यूट्रल रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज एन इंटरेक्शन वेर बोथ स्पेसिस आर हार्म्ड. बोथ स्पेसिस हार्म्ड होता है, उसको क्या बोलता है, क्या बोला जाता है? सो इट्स नॉन एज कंपटीशन. ओके, कंपटीशन जिसमें कि दोनों को हार्म हो. ओके, सो ये स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज अ रिलेशनशिप विच वन स्पेसिस इज इनहिबिटेड वाइल द अदर वन इज अनअफेक्टेड. यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट रिलेटेड टू द एमेंसलिज्म. इसमें वन को हार्म हो रहा है, दूसरा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अनअफेक्टेड है और न्यूट्रल है. ओके, नेक्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, एन एसोसिएशन वेर बोथ स्पेसिस आर बेनिफिटेड. अगर बोथ स्पेसिस बेनिफिट होगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म. ओके, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ रिलेशनशिप in which one of the organism is benefited by the direct utilization of another. So उसको predator बोलते हैं. ओके, predator जिसमें कि एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है. ओके, so answer is option number B is correct related to this one. Next question is consider the following statements regarding the, यहाँ पे correct statement पूछा है. So first statement is bioprospecting is a systematic search for biochemical and genetic information in nature in order to develop commercially valuable products for the pharmaceuticals, agriculture, cosmetic and other applications. Yes, it's a correct one. Next one is the biopiracy is the illegal collection and patenting of the biological materials originally belong to some other community, state or nation. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statement 1 and 2 is correct. Okay, next question is which of the following best describe the process of phytoremediation. Okay, फाइटोरेमेडिएशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है वही पूछा गया है इन द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज
the use of microorganism to clean up oil spill and other environmental pollutants. Is it true? No, it's not correct because it's related to the bioremediation. Okay, not a phytoremediation. So first option is incorrect. Next one is the use of green plants to absorb, degrade or contain contaminants from the soil, water or air. Yes, it's a correct one related to the phytoremediation. नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज the production of biodegradable plastics using plant derived polymers, which is known as bioplastic or bio based plastic like corn and sugarcane. So this is also incorrect. Next one is the large scale clearance of the forest. ये भी incorrect है. So answer will be option number B. Let's come to the next question, which is जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which are one of the following terms best describe the concept of intrinsic bioremediation. Okay, intrinsic bioremediation के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछा गया है. सो फर्स्ट वन इज the technique uses plant to remove, stabilize or detoxify pollutants. Is it true? No, it's not related to the bioremediation. Bioremediation में भी क्या बताया था हमने, इसमें क्या होता है कि the uses of microorganism to clean up oil spills and other environmental pollutants. So first statement हमारा incorrect हो जाएगा. Next one is increase in concentration of the substances within a trophic level in certain tissues, organism, body dose. ये भी नहीं होगा. Next one is the technique of increasing the ability of native microbes of the contaminated site to degrade pollutants through the addition of natural or manufactured population of microorganisms. Yes, option number C is the correct related to this question. So आज के लिए थैंक यू, क्योंकि आज का टेस्ट हमारा कंप्लीट होता है, टेस्ट नंबर 8. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.